Assalamu alaikum and hi. In today's video, we are going to discuss about defense mechanism of gingiva. In very detail, we will discuss each and every concept of defense which are present in gingiva. Contents of today's lecture is defense mechanisms of gingiva, non-specific protective mechanisms, specific protective mechanisms, circular fluid, composition of gingival crevicular fluid (GSF, GCF), function of gingival crevicular fluid, clinical significance. So all these content will be covered in today's video. Defense mechanisms. The gingiva or gums serve as a protective barrier for the underlying structure of the teeth, including the periodontal ligament and alveolar bone. जिंजाइवा हमारे पास आउटर कवरिंग है जो कि इन्वेस्ट करता है टीथ को, ये टीथ को भी सराउंड करते हैं और इसके अलावा हमारे पास एल्वेलर बोन और पेरियोडोंटल लिगामेंट को भी कवर करते हैं. Key defense mechanism of gingiva are these are the different procedures or approaches or phenomena by which gingiva provide defense. Physical barrier, epithelial seal, immune response, inflammatory response, antimicrobial factors, gingival curvic fluids or gingival crevicular fluid or GSF, repair mechanisms. So all these are the various mechanisms on which by which gingiva provide defense to the underlying alveolar bone and periodontal ligaments. So you should remember all these and their names, and we will discuss each one in detail. This is gingiva. This is normal gingiva. You can see clearly bleeding is occur. So any injury, any sort of injury is uh, faced by this gingiva. Non-specific protective mechanisms. Physical barrier. जिस तरह हमने फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म में फर्स्ट लाइन इम्यूनिटी में पढ़ा था कि वो नॉन स्पेसिफिक है, इस तरह नॉन स्पेसिफिक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म में वो मैकेनिज्म होंगे जो कि वायरस, ट्रॉमा, बैक्टीरिया, एनी एजेंट के लिए होंगे. वो ये आइडेंटिफाई नहीं करेंगे कि कौन सा एजेंट आ रहा है, लेकिन वो मैकेनिज्म प्रोवाइड करेंगे without any specificity. So physical barrier. The physical barrier provided by the gingiva is primarily formed by the outer layer of gingiva tissue known as the oral epithelium. हमने gingiva को माइक्रोस्कोपिकली पढ़ा था. एक ओरल इपिथेलियम था, एक जंक्शन इपिथेलियम था और एक सर्कुलर इपिथेलियम था. सारे माइन्यूट डिटेल्स उस वीडियो में मौजूद है, वीडियो प्लेलिस्ट में है, आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा. This epithelium consists of multiple layers of tightly packed cell that serve as a barrier against microbial invasions. The cells of the oral epithelium are interconnected by specialized junctions such as desmosomes and tight junction, which help to maintain the integrity of the barrier. This physical barrier prevents bacteria, viruses, and other pathogens, देखो ये non-specific है, from penetrating into the underlying tissues of the gingiva. सिंपल फिजिकल बैरियर, जिस तरह के स्किन एक फिजिकल बैरियर है, इस तरह gingiva भी एक फिजिकल बैरियर है जो कि टाइट जंक्शन और डिस्मोसोम के थ्रू एक परफेक्ट और एक टाइट फिजिकल बैरियर बनाता है जो कि नॉर्मल एंड लेस टेंशन से सेपरेट नहीं होते. डिस्मोसोम क्या है, टाइट जंक्शन क्या है, ये हिस्टोलॉजी का पोर्शन है जो कि हम पेरियोडोंटोलॉजी में कवर नहीं करेंगे, लेकिन आपको इतना पता होना चाहिए कि फर्स्ट मैकेनिज्म which protect gingiva is physical barrier which is non-specific in nature. The second non-specific protective mechanism of gingiva is epithelial seal. The epithelial seal refer to the tight junction, again tight junction, formed between adjacent epithelial cells in the gingiva. These junctions create a seal that effectively prevent the entry of bacteria and other harmful substances into the underlying connective tissue. So, underlying connective tissue means alveolar bone, periodontal ligament, and cementum. Tight junctions are intercellular protein complexes that seal space between cells, forming an impermeable barrier. Remember that gingiva form impermeable membrane to many agents. This epithelial seal is essential for maintaining the health and integrity of the gingiva. हमें gingiva का integrity भी maintain करना है और health भी maintain करना है. Immune response. Immune response is the
Non-specific protective mechanism. Immune response can occur to any agent. Immune response is further divided into two. It can be specific and it may be specific and non-specific. Specific, I will discuss it upcoming slides. The gingiva is equipped with various immune cells, including macrophages, dendritic cell, and lymphocytes, which play a key role in the immune response against pathogens. Macrophages and dendritic cell act as an antigen-presenting cell capturing and presenting microbial antigens to the lymphocyte, which triggers an immune response. Lymphocytes, including T cells and B cells, produce antibodies and can coordinate the immune response to eliminate pathogens. This immune response is crucial for defending the gingiva against microbial invasion and maintaining oral health. Again, मैंने कहा immune response टू टाइप है, specific भी है, specific कौन सा है? हमारे पास टी सेल एंड बी सेल्स है, नॉन स्पेसिफिक भी है, इन द फॉर्म ऑफ मैक्रोपेजेस है, डेंड्राइटिक सेल है एंड लिम्फोसाइट्स है। तो ये नॉन स्पेसिफिक है, डेंड्राइटिक सेल एंड मैक्रोपेजेस आर नॉन स्पेसिफिक, लिम्फोसाइट्स आर स्पेसिफिक। तो आपने इम्यून रिस्पॉन्स को स्पेसिफिक में भी काउंट करना है और नॉन स्पेसिफिक भी काउंट करना है। इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स, देखो इम्यून रिस्पॉन्स है, अगर एपिथेलियल सील है, फिजिकल बैरियर है, इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स है, जिस मैकेनिज्म में ये स्किन में प्रेजेंट होंगे ऑलमोस्ट उसी मैकेनिज्म, उसी फिनोमेना, उसी आर्किटेक्चर में ये जिंजाइवा में भी प्रेजेंट है। अगर आपको एक जगह पर इसका मैकेनिज्म समझ आया, इस एक दफा इसका स्ट्रक्चर हिस्टोरी समझ आया, तो आप जिंजाइवा में डायरेक्टली पुट करो। मैं हर एक की डिटेल में इसलिए नहीं जाने वाला क्योंकि ये फिर हमारे पास या पीरियोडोंटोलॉजी से हिस्टोलॉजी तक पर कन्वर्ट हो जाएगा। इम्पोर्टेंट जो है वो जीएसएफ है। जीएसएफ को मैं माइन्यूट डिटेल्स में पढ़ने वाला हूँ, आगे आने वाला है। लेकिन आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट आर द नॉन स्पेसिफिक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म ऑफ जिंजाइवा, तो आप फिर कंफ्यूज हो जाते हैं कि मे बी इट इज डिफरेंट फ्रॉम दैट इन आवर बॉडी, जो हमारे बॉडी और मैकेनिज्म है वो ये उससे डिफरेंट है, लेकिन डिफरेंट नहीं है, ऑलमोस्ट सेम ही है। तो इसलिए मैं सुपरफिशियल पढ़ रहा हूँ। When the gingiva is exposed to harmful stimuli such as bacterial infection or physical injury, it initiates an inflammatory response. Inflammation is a complex biological process that involves the recruitment of immune cells, the release of inflammatory mediators, and change in blood flow. Blood vessels in the gingiva dilates, allowing immune cells to migrate to the site of infection or injury. सिंपल मैकेनिज्म है इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स, जहां पर भी इन्फ्लेमेशन हो बॉडी में वही यही सेम मैकेनिज्म है। इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स इज प्रोटेक्टिव इन नेचर। Inflammatory mediators such as cytokines and chemokines help to activate immune cells and promote tissue repair. The inflammatory response is essential for eliminating pathogens and restoring tissue homeostasis in gingiva. Very simple and easy to understand. अच्छा, एंटी माइक्रोबियल प्रोडक्ट्स, ये भी एक नॉन स्पेसिफिक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है जिंजाइवा में। कैसे देख ले, जिंजाइवा produce various antimicrobial factors that help to kill or inhibit the growth of bacteria and other pathogens. देखो प्लाक और कैलकुलस में हम पढ़ेंगे कि the most devastating and most dangerous issue or concern for gingival health is antimicrobial microbial product, but gingiva release antimicrobial product, so this balance is maintained in normal gingiva. But in the case of calculus and plaque, the microbial products increase in size and antimicrobial product become deficient. So antimicrobial product is protective mechanism and non-specific in nature. Lactoferrin and secretory immunoglobulin A means एंटीबॉडीज ए जो कि हमारे पास क्या है, एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है। Defensins are small cationic peptides that disrupt bacterial cell membrane. Defensin, lactoferrin and secretory immunoglobulin A, ये हमारे पास डिफरेंट एंटीमाइक्रोबियल प्रोडक्ट है जो कि जिंजीवा में रिलीज होते हैं, leading to bacterial death. Lysozyme is an enzyme that breaks down bacterial cell walls, while lactoferrins sequester iron, which is essential for bacterial growth. Remember, lactoferrin will deplete the iron and sequester iron for the growth of bacteria, preventing their attachment to epithelial cell. These antimicrobial factors contribute to the maintenance of oral hygiene and the prevention of oral infection. ब्लॉग वीडियो में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे कि ओरल हाइजीन फर्स्ट स्टेप ऑफ प्लेग फॉर्मेशन इज अटैचमेंट। तो ये प्लेग एंटीमाइक्रोबियल प्रोडक्ट है, इस अटैचमेंट को इनहिबिट करेंगे। रिपेयर मैकेनिज्म्स, जिंजाइवा हैज द एबिलिटी टू रिपेयर। रिमेंबर दैट ये जो एंटी माइक्रोबियल प्रोडक्ट्स है ये स्पेसिफिक में भी आता है और नॉन स्पेसिफिक में भी आता है, हम नॉन स्पेसिफिक में भी पढ़ेंगे।
Repair mechanism. The gingiva has the ability to repair and regenerate demand tissues through various cellular process. Repair mechanism एक protective mechanism है जो कि बॉडी में हर कहीं पर पाया जाता है, gingiva में भी है. With the gingiva injured or infected resident cells such as fibroblast proliferate and migrate to the site of damage. Fibroblasts produce new extracellular matrix components such as collagen fiber, which help to rebuild the structure integrity of the gingiva tissue. In addition to fibroblasts, other cell types such as epithelial cell and endothelial cell contribute to the repair process. The repair mechanisms are essential for restoring the function and integrity of the gingiva following injury or infection. So very simple. अच्छा, GSF, gingival crevicular fluid, very important and new concept for you. Remember that gingival crevicular fluid will provide both specific and non-specific protective mechanism because it has a very complex and diverse composition. So it will provide mechanism against both specific pathogens and non-specific pathogens. DSF I will discuss in very detail, so be attentive. Gingival crevicular fluid is a serum-like fluid that flows from the gingival curvix, the space between the tooth surface and gingiva. Gingival sulcus की बात हो रही है. GSF maintain GCF contain various antimicrobial proteins, antibodies and immune cells. देखो, antimicrobial proteins, antibodies and immune cells means it has very diverse composition that help to defend the gingiva against microbial invasions. These components of GCF contribute to the flushing out of bacteria and neutralization of toxin, very important, thereby promoting oral health. GCF also serves as a diagnostic tool for monitoring gingival health and detecting signs of periodontal disease. So ये एक जनरल ओवरव्यू था. GSF आगे डिटेल से डिस्कस करने वाला हूँ मैं. ये आपने याद रखना कि एक डायग्नोस्टिक टूल है for measuring and assessing the health of gingiva. अच्छा, देखो ये हमारे पास क्या है, जिंजाइवल सल्कस है. यहाँ पर क्या होगा, GCF होगा जो कि जिंजाइवल क्रोविकुलर फ्लूइड है. ये हमारे पास नॉर्मल जिंजाइवा है. आप इनापी आपने क्लियरली फर्स्ट वाली वीडियो में स्टडी की होगी. देखो ये हमारे पास क्या है, जिंजाइवा है. ये हमारा इंटरडेंटल पेपिला है, ये मार्जिनल जिंजाइवा है, ये अटैच जिंजाइवा है, ये स्टिपलिंग है, ये एल्वेलर म्यूकोजा है, ये म्यूकोजिंजाइवल जंक्शन है. तो डिफेंस मैकेनिज्म हम ये फिजिकल बैरियर भी प्रोवाइड कर रहा है. इसके अलावा इसमें इम्यून रिस्पॉन्स भी है. जिंजाइवल सल्कस है जिसमें GCF है. तो ये मुख्तलिफ मैकेनिज्म जिंजिवा में मौजूद है जो कि हमारे पास डिफेंस मैकेनिज्म है. अच्छा, स्पेसिफिक इम्यून मैकेनिज्म, जो स्पेसिफिक इम्यून मैकेनिज्म हमारे पास बॉडी में है मीन्स आउटसाइड द जिंजाइवा है वो यहाँ पर भी है. स्पेसिफिक इम्यून मैकेनिज्म है टू बेसिक कंपोनेंट. यहाँ हमने इम्यूनिटी में बार बार पढ़ा है. ह्यूमरल इम्यूनिटी मीन्स एंटीबॉडीज मीडिएटेड एंड सेल मीडिएटेड मीन्स टी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, लिम्फोसाइट मीडिएटेड इम्यूनिटी. ह्यूमरल में प्लाज्मा आता है, एंटीबॉडीज आते हैं, इसमें टी सेल्स आते हैं. ये स्पेसिफिक है. both arise from stem cell in the bone marrow. So this is about specific immune mechanism. आपको नाम याद रहने चाहिए. वाइवा में ऑस्पिस में अक्सर पूछा जाता है व्हाट आर द स्पेसिफिक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म्स एंड नॉन स्पेसिफिक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म ऑफ जिंजाइवा. तो आपने कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना. जो कि बॉडी में है वही जिंजाइवा भी एक बॉडी का पार्ट तो है ना. जिंजाइवा इज नॉट आउट ऑफ द बॉडी, सो आपने वही बताने हैं. बड़े माइन्यूट डिफरेंस थे वो मैंने आपको बता दिए. अच्छा, GCF, one of the important topic of today's lecture, gingival crevicular fluid. तो ये क्या है, देखो. Gingival crevicular fluid is a serum-like fluid. इसको ultrafiltrate serum भी कहते हैं. Serum-like fluid that flows from the gingival curvix, which is the space between the tooth surface and the gingival tissue. First of इसकी location है, तो ये कहाँ पर है, gingival sulcus में है. GCF play a significant role in maintaining oral health and serves as an important diagnostic tool for assessing gingival and periodontal status. प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म भी है और एक डायग्नोस्टिक टूल भी है. किस तरह है, डिटेल में डिस्कस करने वाला हूँ. GCF is constantly produced in the gingival curves as a result of various physiological processes. देखो gingival GCF जो सिलाइवा जिसकी तरह प्रोडक्शन होती है, सिलाइवा की इस तरह ब्लड की प्रोडक्शन होती है, इस तरह GCF की भी प्रोडक्शन होती है. ये
ऑल ओवर द लाइफ होती है और ये जस्ट फ्लक्चुएट करता है डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन। इसकी क्वांटिटी कम भी हो सकती है, इसकी क्वांटिटी ज़्यादा भी हो सकती है। The formation of GCF is influenced by factors such as inflammation. It will increase inflammation. Mechanical stimulation will also increase its flow, and hormonal changes. Some hormone may increase and some decrease their flow. So this is GCF. Very transparent fluid, serum like fluid present in gingival crevicular fluid। देखो अब ये किस फॉर्म में मौजूद है? यहाँ पर कुछ इन्फ्लेमेशन हुआ है, नॉर्मली हमें ये विजिबल नहीं होता क्योंकि ये सिलिका में मिक्स कर जाता है। लेकिन अगर आप इसको जिंजाइवल कर्विक्स में देख लो, जिंजाइवल सर्कस में देख लो, तो इन्फ्लेमेशन है, तो इसकी प्रोडक्शन ज्यादा हुई है, तो ये क्या है? GCF। अच्छा, इम्पोर्टेंट पार्ट इज़ कंपोज़िशन। अब में कंपोज़िशन याद रखना है। मैंने पहले भी बताया था इसकी कंपोज़िशन वाइड रेंज में है। तो इसमें सेलुलर एलिमेंट है, इलेक्ट्रोलाइट्स भी है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी है, मेटाबॉलिक एसिड एंड एंड प्रोडक्ट्स भी है। मेटाबॉलिक एसिड एंड प्रोडक्ट्स ये भी इसमें मौजूद है। इसमें एंटीबॉडीज़ भी है, इसमें इम्यूनो मीडिएटर्स भी है, इसमें एंजाइम्स है, वेरियस फैक्टर्स भी है। तो सेलुलर एलिमेंट में एपिथेलियल सेल है, ल्यूकोसाइट्स है, बैक्टीरिया है। इलेक्ट्रोलाइट्स में सोडियम है, पोटेशियम है एंड कैल्शियम है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स। मेटाबॉलिक एसिड एंड प्रोडक्ट्स और लैक्टिक एसिड ये क्या है? एक इम्यून लैक्टिक एसिड एक इम्यूनो प्रोवाइडिंग एजेंट है। हाइड्रोक्सीप्रोलीन है, प्रोस्टाग्लैंडिन है, इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स करता है, यूरिया है, एंडोटॉक्सिन है, साइटोटॉक्सिक सब्सटेंस है, एंटी माइक्रोबियल और एंटी बैक्टीरियल फैक्टर्स है। तो कंपोजिशन आपने हेडिंग्स में याद करना है। सेलुलर एलिमेंट है, इलेक्ट्रोलाइट है हमारे पास, इसके अलावा इसमें मेटाबॉलिक एंड प्रोडक्ट है। मेटाबॉलिक एंड प्रोडक्ट में और भी फैक्टर्स काउंट होते हैं। एंजाइम्स एंड एंजाइम इनहिबिटर्स भी मैंने कहा, इसमें एंजाइम्स भी है, जस्ट लाइक एसिड फास्फेटेज है, अल्कलाइन फास्फेटेज है, पायरोफॉस्फेटेज है, लाइसोजाइम्स है, हाइलोरिनडेज है। इसमें प्रोटीलेटिक एंजाइम्स भी है, इसमें लैक्टिक डिहाइड्रोजिनेज भी है। तो ये इसमें मुख्तलिफ कंपोनेंट है, लेकिन यहाँ पर बहुत ही शॉर्ट दिया हुआ है। तो आप बेसिक ये भी याद करो, सेलुलर एलिमेंट याद करो, इलेक्ट्रोलाइट्स याद करो, ऑर्गेनिक कंपाउंड याद करो, मेटाबॉलिक एंड बैक्टीरियल प्रोडक्ट याद करो, एंजाइम एंड एंजाइम इनहिबिटर्स आपको याद करने होंगे। तो ये क्या है? GCF है। फंक्शन ऑफ जिंजाइवल क्रोविकुलर फ्लूइड। फंक्शन आप ऑलमोस्ट आपको याद आने चाहिए। Flush out microorganism. GCF help to flush out microorganism, food debris, and other foreign particles from the gingival crevice, thereby reducing the risk of bacterial colonization and infection. Very simple. Provide immune defense. GCF contain immune cells, antibodies, and antimicrobial protein that help to defend the gingiva against microbial invasions. These components of GCF contribute to the innate and adaptive immune response in the oral cavity. Neutralize toxins. GCF contain molecules such as antibodies and antimicrobial peptides that can neutralize bacteria toxin and inhibit the growth of oral pathogens. Regulate inflammation. GCF contains cytokines, chemokines, and other inflammatory mediators that regulate the inflammatory response in the gingiva. By modulating the activity of immune cells and other inflammatory cells, GCF help to maintain tissue homeostasis and prevent excessive inflammation. Promote tissue repair. GCF contain growth factors and other molecules that promote tissue repair and regeneration in the gingiva. These factors stimulate the proliferation and migration of fibroblast, epithelial cells, and endothelial cells, contributing to the repair of damaged gingival tissues. So these are the functions of GCF। फंक्शन अगर आपको कंफ्यूज कर रहे हैं तो मैं आपको सिंपल ट्रिक बताता हूँ। आप GSF की कंपोजिशन याद कर लो। फॉर एग्जांपल मैं कंपोजिशन में याद कर रहा हूँ, सीधर एलिमेंट में मैं ल्यूकोसाइट को काउंट करता हूँ, एपिथेलियल सेल को मैं याद करता हूँ, या मैं एक और जो इसमें इलेक्ट्रोलाइट्स को मैं काउंट करता हूँ। अगर मैं उसका इलेक्ट्रोलाइट का या ल्यूकोसाइट का काम मुझे आता है, इस तरह हमारे पास अगर प्रोटीन का काम मुझे आता है, लैक्टिक एसिड का काम मुझे आता है, प्रोस्टाग्लैंडिन का क्या फंक्शन है वो मुझे उसकी मेरी बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, तो मैं GSF का फंक्शन इजीली प्रेडिक्ट कर सकता हूँ। तो आपने कंपोजिशन याद करनी है। कंपोजिशन में जो कंपोनेंट है उसका फंक्शन आपको ऑलमोस्ट आता होगा, तो आप उसको यहाँ पर पुट करें तो GSF का फंक्शन आपको आएगा। लेकिन ओवरऑल इसका फंक्शन
प्रोटेक्टिव भी है, रिहेबिलिटेटरी भी है, रिजेनरेटिव भी है एंड वाइड रेंज है जो कि इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है जिंजाइवल हेल्थ में। अच्छा, क्लिनिकल कोरिलेशंस में हमने स्टार्ट में एक बात की कि ये एक डायग्नोस्टिक टूल है, तो किस तरह है देख लें। पेरियोडोंटल डिजीज डायग्नोसिस एंड मॉनिटरिंग। देखो, GCF analysis is commonly used in the diagnosis and monitoring of periodontal disease, including gingivitis and periodontitis. Change in the composition. First diagnostic tool, composition will change. जस्ट लाइक हमारे पास जो सिस्टेमिक इन्फ्लेमेशन होते हैं बॉडीज में, उसमें ब्लड की कंपोजिशन चेंज होती है, यहाँ पर GCF और ब्लड दोनों की कंपोजिशन चेंज होगी। अच्छा, such as increased level of inflammatory mediators and enzymes are indicative of periodontal inflammation and tissue destruction. Clinical parameters such as bleeding on probing BOP, important factor, and probing pocket depth PPD are often correlated with GCF flow rate and biomarker levels. Monitoring change in GCF parameters over time and can help assess the progression or resolution of periodontal disease. देखो, progression और resolution को भी ये डिनोट करता है। अगर हमारे पास inflammatory cell constantly increase होते हैं, inflammation हम किस तरह काउंट करते हैं? अगर न्यूट्रोफिल का काउंट 200 मिलीमीटर पर क्यूब से ज्यादा है, तो हम इसको inflammatory response कहते हैं। यहाँ पर inflammation constantly present है। तो जब हमारे पास GCF का लेवल कॉन्स्टेंटली, कंपोजिशन उसका अल्टर्ड है, उसमें इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर ज्यादा है, तो ये डिनोट कर रहा है कि यहाँ पर हमारे पास इन्फ्लेमेशन जारी है, पेरियोडोंटाइटिस रिजॉल्व नहीं हुआ है, जिंजिविटिस रिजॉल्व नहीं हुआ है। इस तरह अगर इसकी जो क्वांटिटी है वो भी इंक्रीज हो रही है, तो इट इज क्लियरली डायग्नोस्टिक दैट इन्फ्लेमेशन इज गोइंग ऑन। जस्ट लाइक इन द बॉडी, इन द सिस्टेमिक लेवल, वी यूज blood as a diagnostic tool. Here, blood and GCF is diagnostic tool. Its level and its composition both are important in assessing gingival health assessment. Again, वो बात repeat हो रही है। GSF analysis can provide valuable information about gingival health and susceptibility to periodontal disease. Healthy gingiva typically exhibit low level of GCF flow and inflammatory mediators, while inflamed or diseased gingiva show increased GCF flow and elevated level of inflammatory biomarkers. Assessing GCF parameters such as flow rate, protein concentration, and cytokines levels can aid in the early detection of gingival inflammation and help guide appropriate treatment intervention. Flow rate will be increased, protein concentration may increase or may decrease, and cytokine level may increase or may decrease. So all these will show gingival health, and we will assess gingival health based on these informations. Response to periodontal treatment. GCP analysis is used to evaluate the effectiveness of periodontal treatment interventions, such as scaling and root planing, periodontal surgery, and adjunctive therapies. Following treatment, change in GCF flow rate and biomarker level reflect the response of gingival tissue to therapy. Very important clinical correlation. Reduction in GCF flow rate and inflammatory biomarkers indicate successful treatment outcomes, where persistent innovation may suggest ongoing inflammation and the need for further intervention. Prediction of disease progression. GSF analysis can help predict the risk of disease progression and tooth loss in patients with periodontal disease. Elevated level of certain biomarkers in GSF, such as matrix metalloproteins, remember MMPs are the basic mediators in the case of bone loss. अगर हमारे पास individual bone का loss हो रहा है, तो GSF में कौन सा मटेरियल ज्यादा होगा? MMPs, matrix metalloproteins. So it will be the indicator or biomarker for alveolar bone health. And inflammatory cytokines have been associated with the increased tissue destruction and disease severity. इस इसके अलावा फिर कोलेजन फाइबर्स डिग्रेड हो रहे हैं, तो कोलेजिनेज एंजाइम ज्यादा होंगे GCF में। आपने याद रखना। Monitoring these biomarkers over time can help identify individuals at higher risk of disease progression and guide personalized treatment strategies. Prognostic failures. GSF value has prognostic value in predicting treatment outcome and long-term prognosis in patients with periodontal disease. Baseline level of GSF markers such as interleukin 1 beta, it also the marker of bone destruction,
and tumor necrosis factor alpha, TNF alpha. It is soft tissue or hard tissue inflammatory mediators have been correlated with disease severity and treatment response. High level of these biomarkers may indicate a poor a prior prognosis and need for more aggressive therapeutic approaches. इसके अलावा हमारे पास और बायोमार्कर्स इसमें ड्रग्स भी आते हैं। आपने सुना होगा कि हमारे पास टेट्रासाइक्लिन काज या चेंज एंड डिस्कलरेशन ऑफ जिंजाइवा, तो अगर आपने याद रखना है कि ब्लड के जो कंपोनेंट्स है वो ड्रग्स सम ड्रग्स कैन पास to the GCF, just like metronidazole, tetracycline, and many more. So that's all. Thank you so much for watching. If you learned something valuable from this video, please give me a favor, like this video, subscribe this channel, and thank you so much for watching. और अगर आपको वीडियो को समझना है तो काइंडली फर्स्ट वीडियो से स्टार्ट ले और एंड तक सारे वीडियोस देखे। मैं वीडियो का जितने भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है वो मैं एक एक डिटेल से डिस्कस करने वाला हूँ। इसके बाद हमारी वीडियो आने वाली है वो जिंजाइवल इन्फ्लेमेशन पर आएगी एंड क्लिनिकल हिस्ट्री ऑफ जिंजिवाइटिस। तो अगर आपने वो वीडियो मिस नहीं करने तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड स्टे ट्यून एंड स्टे सेफ।